हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोबाल्ट 60 कैमरा हाउ टू यूज़ कोबाल्ट 60 कैमरा के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे फिक्स करें इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम आपको अपने एनडीटी क्लास में ले चलते हैं जिसमें हम आपको कैमरा को कैसे हैंडलिंग किया जाए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, सो लेट्स सी all these things. Firstly, I am going to introduce you about the camera. So this is Cobalt 60 camera. These are the cautions written here. These are the caution written here. This is the pin. Okay, camera connecting pin connected from here. See, this is from this side. Firstly, we have to see. I am going to show you. See this. How I connect it, I also show you. This is the camera and this is the guide tube, crank guide tube, from where we on or off from right direction. This is showing, we just move it, then it's become on. इसको घुमाने के बाद ये ऑन हो जाता है। ओके, सो मैं आपको अभी ये बताने जाऊँगा कि इसको कनेक्ट करते कैसे हैं। सो पहले मैं कनेक्ट करने आपको बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं। वो है दिस पाइप यूज़ फॉर फ्रंट ऑफ द कैमरा। फ्रंट ऑफ द कैमरा यूज़ करने के लिए कैमरा के फ्रंट में यही इससे सोर्स निकल के उस पाइप से होके हुए वो वहाँ इंड तक जाता है। उसके बाद वो एक्सप्लोजर करा। दिस इज़ मैग्नेटिक स्टैंड। ओके, ये है मैग्नेटिक स्टैंड और हमें इसका एक्सप्लोजर करना है, इसका हमें इमेज लेना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। 1 मिनट प्लीज़। अब ये देखिए, मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। अब देख लीजिए, इसको इधर से कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये डायरेक्ट जा रहा है ऑन ऑफ क्रैंक के उसके पास। वहाँ से हम लोग ऑन कर सकते हैं इसको। ओके, और इस ट्यूब से जो हमने आगे कनेक्ट किया है, इस ट्यूब से सोर्स इस कैमरा से निकल के डायरेक्ट इस कैमरा से निकलते हुए इसके साथ हम लोग जब ऑन करते हैं तो एक अंदर में गाइड ट्यूब होता है, वो आगे इसको पुश करता है, धकेलता है। धकेलने के कारण वहाँ तक पहुँच जाता है सोर्स, इस पॉइंट तक पहुँच गया फ्रंट पे। तो उसके बाद वो अपना एक्सप्लोजर करने लगता है। हम लोग थिकनेस के हिसाब से दे देते हैं कि टाइमिंग, एक्सप्लोजर टाइम देख लेते हैं कि 30 सेकेंड और 1 मिनट 2 मिनट, लाइक दैट। दिस इज एनफ फॉर एनफ, लाइक इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस, क्यूरी and this camera now 22 curie available. Okay, the source is 22 curie and these are also the spools. So we have to inspect all these spools if there are any defect or not with this camera and with the help of the films. Firstly, we capture the pictures in the negatives and films. After that, we okay. So okay, this guy is Satyanarayan. He is technician, radiography technicians. Now he is using paper tape. And these are the leads, the several numbers by which we can make the
write the spools number, welder number, joint number, several things. And these are the films, not explosion films, only films. After we give some of the time, then it become explodes. So Satyanarayan ji using paper tape here, paper tape, and put some of the spools number. These are the joints given us, and these are the spools number, and top of the spools number WO503/19 KRH401TS/1 is the spools number, and these are the joints, and we have to these are the spools, so we have to work on it. So he is going to paste the several number, just like WO. So firstly on mirror view, you have to put on mirror view, because the image come to on turnover. So he is putting mirror view W. Now next O is pasting WO. Now 5. I have to help him for searching 5, 4, 6, 4. So we have to firstly search on it and then paste on it. So after some time I will show. चिपकाइएगा नहीं. Hello. हाँ, see, Satyanarayan ji make it. So you have to make like this. Date number 26. जस्ट उल्टा आपको लगाना है इधर. उल्टा लगाने के बाद ये इस पे पेस्ट करेंगे. किस पे पेस्ट करेंगे? जो हमारा फिल्म्स है उसके फ्रंट पे, क्योंकि उसका इमेज सही सही सीधा सीधा है, इसलिए अब वो पेस्ट कर रहे हैं. ओके, गुड. नाउ he one thing is using ASTM. See, ASTM IQ. It is IQ means ASTM. You can see ASTM IQ indicator. By this you can know the quality of the films, okay, it is good or not. So exposure time is good, all the things. Quality, actually only the quality, ये सिर्फ क्वालिटी दिखाता है आपको. यस, सो वी हैव टू मेक एक्सप्लोजर ऑन दिस spools. So he is going to set the films as below the spool. See, and ASTM, using ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड IQ, उसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड IQ. So he is using अमेरिकन स्टैंडर्ड IQ here. Now one thing also. So from this to film, this is the escape source distance from the films. So these are the source distance. So I think it's 10 mm distance from the films, and we have to actually inspect this thing, this area, this area. So most important thing is we have to take precautions, safety measure. We have to do all the things in a safety way. Firstly, we have to not put all the films here, because some of the exposures affect these films. So we have to keep it and place in a safe place. We keep it and place in a safe place. Always keep in mind. And most important thing, we have to use survey meter, dosimeter, everything for safety measure. So we are going to switch on the camera, and now we are going to on it. So I think Satyanarayan ji, it's take how much time? 30 seconds, 40 seconds. He is saying it will take 40 seconds. So he's going to on it. Firstly see how, and we are running back. See,
40 seconds we have to wait here, and after that we have to off the camera and then we go there. These are the views. These are the views of Visakhapatnam. You can see, yeah, Satyanarayan ji out of the camera. At least he is taking 30-meter distance, and lots of wall is there, so he is not going to affect anymore. He have a survey meter also and dosimeter in his pocket. I am not going to show you. So please see this. Okay, thank you.